Alright, I will now be access तो हो गया है, अब बस एक्सेल रहता है. एक्सेल के अंदर I'll do the revision assignment which pretty much covers everything जो भी which pretty much covers all the formulas that we can expect tomorrow, क्योंकि मैंने कहा था कि this is pretty much what the paper will look like um, tomorrow. So starting off, consider Excel sheet 2 to answer the following questions. Now I've done some working already यहाँ पर because I had to understand कि भाई क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है ना ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. नाउ the thing is that Excel with Excel 2013, the problem that we might have is कि we might not with problem with Excel 2013 is कि वहाँ पर whisker और क्या कहते हैं बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट नहीं है. तो if tomorrow we obviously हमारे स्कूल के पीसीज में we have Excel 2016, so what you do is के insert वाले menu पे, don't go to any of these, insert वाले menu पे, which is this menu right here, insert menu के ऊपर यहाँ पर you can see ये वाला बटन दबाना होता है, वो यहाँ पर बीच में आएगा, right, ये वाला. यहाँ पर एरिया चार्ट है बट इन 2016 ये वाला आता है, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, उसको व्हेन यू जस्ट उसके ड्रॉप डाउन पे दबाओगे तो वहाँ पर हिस्टोग्राम की ऑप्शन आएगी और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की ऑप्शन आएगी, राइट. सो यू कैन जस्ट क्रिएट them from there. You don't have to, you know, इतनी उसमें फिर आपको ख्वारी नहीं होती. However, I will be teaching you how to do it on Excel 2013 in case it is not available tomorrow or if there are any problems with it. So first, our question is calculate frequency and make histogram. So यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं box and whisker plot बनाया हुआ है. I will delete all of this and then I will do it again just to show you guys. Okay. Alright, so calculate frequency and make histogram. So frequency कैसे बनाते हैं? Frequency बनाने का एक तरीका है कि बिन्स बनानी होती हैं पहले. Now we've all studied stats, right? We are studying stats. तो अब मेरे पास यहाँ पर सारा अनग्रुप डेटा है. अब मुझे आई नीड टू ग्रुप दिस डेटा. तो वो कैसे बनाते हैं? बिन्स बना के, डेटा इंटरवल्स बेसिकली. सो यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू 4 है तो आई विल गो माई लोएस्ट वैल्यू आई गो, यहाँ पर मैं बिन्स लिख दूँगा, ठीक है. लोएस्ट वैल्यू आई गो 0 and then 5, 10, 15, 20, इस तरह करके highest value 82 है, so I want to go up to 85. So instead of having to manually write all of this down, like अगर मैं ये वाले भी delete कर दूँ, right, so all I can do is highlight these two. मैं बड़ा कर दूँ so you guys can see this properly, right. So what you do is you highlight these two and then you click on this little box right here and then you just scroll down and as you can see यहाँ पर 35 लिखा आ रहा है ना. Scroll it down till it goes to the value that you want. So I want 85 तक, ठीक है. So these are my data intervals. अब there's a very simple way to make a histogram. और histogram जब बनाते हो तो उसके अंदर ही frequency निकल आ जाती है, ठीक है. So tomorrow on your PCs what you'll do is you'll go over to यहाँ पर file का बटन दबा के go over to options एंड एड-इन्स पे जाना है, एड-इन्स वाले मेन्यू पे जाना है. एड-इन्स वाले मेन्यू पे जाके यहाँ पर वेट, यहाँ नहीं होता, वेट कहाँ होता है, एड-इन्स वाले मेन्यू पे ही आता है ना. हाँ, तो एनालिसिस टूल पैक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है. तो वो यहाँ पर आ रहा होगा उसके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड इट इन माई पीसी. तो एनालिसिस टूल पैक होता है, इट्स एन एक्सेल एड-इन, ठीक है. यू क्लिक ऑन दैट एंड वंस यू एडेड इट इन, क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है ना एड-इन्स एनालिसिस टूल पैक, इट्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड इट इन. तो यहाँ पर ओके दबा के व्हेन यू गो ओवर टू क्या कहते हैं डेटा, हाँ, व्हेन यू गो ओवर टू डेटा यू कैन चेक अगर एनालिसिस टूल पैक डाउनलोड हो चुका है या नहीं. यहाँ पर एनालिसिस की एक रिबन आ रही होगी, एक टैब आ रही होगी, वहाँ पर डेटा एनालिसिस लिखा होगा, ठीक है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर
हमारे पास दो चीज़ें हम लोग यहाँ से बनाते हैं, एक तो हम यहाँ से जिस तरह हिस्टोग्राम यहाँ से मैं बनाऊँगा, और यहाँ से हम लोग बनाते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, वो कहाँ है, वो भी यहाँ, हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, राइट। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस वगैरह सब कुछ आता है, राइट। तो यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम पहले सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो क्लिक ऑन ओके, यहाँ पर आई डू इट अगेन, डेटा एनालिसिस में जाके यू नीड टू फाइंड हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम जब ढूंढ लिया, डबल क्लिक इट और क्लिक ओके, इट्स फाइन। इनपुट रेंज और बिन रेंज, ठीक है ना, दिस इज़ व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनपुट रेंज के अंदर सिर्फ ये वाले डेटा सेल्स डालने जो कि कहते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, डू नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ द एक्चुअल ग्रेड्स, बिकॉज इफ़ यू डू वहाँ पर एरर आता है, क्यों कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई के न्यूमेरिकल वो ना कि कहते हैं नामों के साथ अगर डालने की कोशिश करें, इनपुट रेंजेस कंटेन नॉन न्यूमेरिक डेटा, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यूर ओनली सिलेक्टिंग नंबर्स हियर। यहाँ पर ये वाले नंबर्स आ गए, और बिन रेंज वहाँ पर लिखी हुई है ना, तो ये हमारी डेटा इंटरवल्स आर बेसिकली कॉल्ड बिन्स, राइट। तो ये हमारी बिन रेंज है। नाउ what you need to make sure कि you're not supposed to select labels, but you are supposed to select chart output. Remember, it's very important that you select chart output. यहाँ पर OK दबाओगे, and on another sheet it will make you your histogram, as well as it will give you the frequencies for the data intervals that you have entered, right? Real simple. It gives you आपका पूरा हिस्टोग्राम आ गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सारी आ गई, और बिन भी आ गई आपके यहाँ पर, जो सारी डेटा इंटरवल्स हैं उनके अंदर कितनी कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या क्या लाई करता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हैविंग टू मैनुअली राइट फ्रीक्वेंसी हियर एंड देन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना, वो पूरा यूं करके उसके बाद देन यू सेलेक्ट द बिन्स अरे, एंड देन यू ओ शिट, इस तरह करने की जगह व्हाट्स सिंपलर इज दैट यू जस्ट वेट एक सेकंड, ये वैल्यू अलग क्यों आ रही है, एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट point is that instead of having to manually write the frequencies, you can just create just go over to data analysis, select histogram, वहाँ पर अपनी ये डेटा टेबल डालनी है और ये बिन्स रे डालना है, एंड सिलेक्ट चार्ट आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट चार्ट आउटपुट, बिन रेंज वगैरह डाल के यू कैन हैव योर आंसर। ओके शिट, आई जस्ट created it again. I'll delete that real quick. अच्छा, now question B, find out mean, median and mode and comment on the skewness of the data. अब मुझे डेटा की स्क्यूनेस के बारे में इतना नहीं पता, so what I'll just do is I will go over to data analysis, descriptive statistics, यहाँ पर select किए, input range मेरी ये होगी पूरी, ठीक है, उसके अंदर, और फिर summary statistics select करने हैं यहाँ पर, make sure you select summary statistics, ठीक है। मैं इसी वर्कबुक में इसी में चाहता हूँ, इसी क्या कहते हैं, आउटपुट रेंज यार यहाँ आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ पर ओके दबाया, एंड देन देयर यू गो, दोज आर योर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पर मेंशन कर देना मीन, मीडियन, मोड, अगर मांगे मोड, पता नहीं पीसी के साथ एरर नहीं आता मेरा, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैम्पल वेरिएंस, क्यूनेस, सब कुछ आ गया, ठीक है। यू हैव योर मैक्सिमम, योर मिनिमम, योर सम, योर काउंट, ठीक है। दिस एक्चुअली हेल्प सॉल्व सम ऑफ योर क्वेश्चंस एज वेल। फाइंड आउट मीन, मीडियन, मोड, वो फिर यहाँ से इस तरह एक्सट्रैक्ट करके, तो मीन ये पकड़ना, यहाँ साइड पे ले आओ, मीडियन, मोड ये पकड़ना, यहाँ साइड पे ले आओ। यहाँ पर एक नोट सा बना देना कि वेट, पीसी एरर, ठीक है। मोड खुद निकालने की भी कोशिश करोगे तो यही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मोड का एक बहुत गंदा रोल है, एटलीस्ट मेरे पीसी के लिए। या सी no matter what I do, even if I'm generally वो क्या कहता है एंटर कर रहा हूँ, नहीं आएगा मेरा, कभी भी नहीं आता। उन्होंने स्क्यूनेस मांगी हुई है, कमेंट करने को बोला हुआ है, स्क्यूनेस कह देना कि स्क्यूनेस नेगेटिव में, बस बात ख़त्म सर, आपका काम हो गया। अच्छा, anyways, now they've also asked for how many students data is given, वो यहाँ पर काउंट आ जाता है, ठीक है। काउंट पकड़ के यहाँ पर रख देना, जस्ट चेंज काउंट का नेम, चेंज इट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत आसान तरीके हैं, सी दिस इस लाइक आई
मैंने 2 स्टेप्स किए हैं, एंड आई मैंने ये सारे क्या कहते हैं क्वेश्चंस का जवाब दे दिया, A to D। ठीक है। नंबर अगर वैसे खुद काउंट करके निकालना है तो इज़ इक्वल टू काउंट लिख के, या ये दबाना है। आई वुड एडवाइस कि तुम लोग यहाँ पर FX दबा लो, ताकि तुम लोगों के पास यहाँ पर हर एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन आ जाए। यहाँ पर नीचे इट हेल्प्स। I do not need it. You don't need to select नाम या grades. You can select both. आंसर वही आना है, ठीक है। इट जस्ट नीड्स टू बी कि जितने नाम है उतना डेटा है, जहाँ जहाँ डेटा है वो सारे सेल्स काउंट करके आपको दे देगा, जस्ट 20। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास। ऑलराइट, alright. Now moving on to find out how many students scored greater than or equal to 55. तो अब यहाँ पर find out how many students. Here's the thing with Excel. There are a bunch of formulas, and you pretty much have to figure out what formula they're asking you to use. So whenever they ask you find out how many of this or find out how many of that did this or that, इसका मतलब है कि भाई आपने काउंट इफ लगाना है, काउंट लगाना है, ठीक है। काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। बट नाउ अब हमें ये समझ आ गया यहाँ पर काउंट लगना है। अब हमें ये जानना है कि यहाँ पर काउंट लगना है, काउंट इफ लगना है, काउंट इफ्स लगना है। वो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्या कहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन the number of conditions or criteria that they have mentioned. So how many students scored greater than or equal to 55? Greater than or equal to 55 is a condition, right? That is obvious. It's a condition, right? It can't be any other student. It can't be all student. It has to be students that scored greater than or equal to 55. Now इससे हमें समझ आ गया कि हमने count if इस्तेमाल करना है, because there is only one condition, greater than or equal to 55. So how we would write it is equal to count if, ठीक है। count if range हमारी ये है। You don't need to select the names obviously, क्योंकि names के अंदर तो greater than or equal to वाली option तो नहीं लग सकती। I will show you how to use count if, and I'll show you how to use decount, so that अगर एक तरीका नहीं काम कर रहा तो दूसरा इस्तेमाल कर लो, right? But count if should give you the right answer. How many students scored greater than or equal to 55? So फिर range के बाद ये दबा के, alright, so now condition greater than or equal to 55, right? Oh shit, अच्छा हाँ, यहाँ पर speech marks लाने हैं, sorry forgot. Greater than, speech marks greater than का sign और equal to 55। एक बहुत अच्छा तरीका जिससे मैंने याद रखा हुआ है कि मैं साइन गलत तो नहीं लगा रहा, इसके देवास ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 55। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x लगा लेता हूँ पहले ही, ठीक है, ताकि मुझे समझ आ जाए कि x हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 55। ठीक है। एंड के अंदर ये हटा देना अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ प्लीज़ x मत लिखना वरना आंसर नहीं आएगा। Count if 10 है। Alright, so the answer is 10. You can also check it. 11 to 21, that's 10, right? So yeah, that's all right. Now count if भी तरीका होता है, decount भी तरीका होता है। I will explain decount and desum. So decount कैसे करते हैं? So what the first thing you do for decount is जितने भी headings हैं ना टेबल के, you select them. Like अगर ये पूरी टेबल है, राइट? सो आई विल सेलेक्ट ऑल द हेडिंग्स, पेस्ट देम हियर, एंड देन यहाँ पर मैं अपनी कंडीशंस अप्लाई करूँगा, राइट? सो ऑब्वियसली इस पे तो नहीं करना, इस पे करना है। बट अब देखो यहाँ पर 2 हेडिंग्स ये ना, स्टूडेंट्स इन ग्रेड, सो आई विल कॉपी दैट, पेस्ट इट एनीवेयर एल्स ऑन द डॉक्यूमेंट or on the spreadsheet, and then I will enter my conditions. So what are my conditions? My conditions are greater than or equal to 55. So सिर्फ grades पे condition है ना, तो greater than और equal to 55, that's my condition. अब यहाँ पर मैं decount लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी condition लगा देता हूँ decount की। So type in decount, database के अंदर ये खोल लो, just so that it is easier for you to understand. database के अंदर you select
the entire table, including the headings, including the numbers, including the names, everything. एंड देन फील्ड के अंदर यू नीड टू सेलेक्ट के कौन से वाली फील्ड के अंदर कंडीशन लग रही है. अब यहाँ पर कंडीशन लग रही है ग्रेड्स वाले फील्ड के अंदर, राइट. तो यहाँ पर हम ग्रेड्स सेलेक्ट कर लेंगे, राइट. फील्ड के अंदर इज ईदर द लेबल ऑफ द कॉलम in double quotation marks or a number that represents the column's position in the list, right. So either is a label of the column in double quotation marks, that's not important. Point is that it needs, देखो अब यहाँ पर double quotation marks के अंदर grades लिखा आ रहा है. What this means is that कि अब अगर मेरे पास students के अंदर कोई condition होती ना, let's say मैंने हमजा का grade निकालना था, I will do that actually. So अब यहाँ पर ऑब्वियसली मेरी कंडीशन ग्रेड्स वाले कॉलम हेडिंग के अंडर है, तो मैं यहाँ पर ग्रेड्स वाली फील्ड सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ ग्रेड्स वाली, नॉट द इंटायर टेबल, नथिंग, जस्ट सिर्फ ग्रेड्स वाला, ग्रेड्स की हेडिंग. और क्राइटेरिया के अंदर आई विल ऐड दिस. अगर बहुत लंबी है, मतलब स्टूडेंट आईडी यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, पूरी चीज़ को फिर सेलेक्ट करना है. ऑलवेज मेक श्योर कि क्राइटेरिया के अंदर यूर सेलेक्टिंग दिस, यूर सेलेक्टिंग द एक्चुअल कंडीशन एंड दी एक्चुअल हेडिंग्स. अगर हेडिंग में कुछ लिखा भी नहीं है वो फिर भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है. तो यहाँ पर मैं ओके दबा दूंगा और यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 10. स्टूडेंट्स स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 55, यहाँ पर भी 10 है और डी काउंट के अंदर भी 10 है. नाउ आई विल शो इट टू यू कि मतलब किसी और एग्जाम्पल के अंदर. यहाँ पर अब मैं ग्रेड्स हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ हमज़ा का रिज़ल्ट मिले, ठीक है. तो हमज़ा का रिज़ल्ट, हाँ हमज़ा का वो यार वो लुकअप के अंदर होता है, मैं क्या कर रहा हूँ. अच्छा एनीवेज, तो फील्ड स्टूडेंट वाला सिलेक्ट कर लेंगे. क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा, डेटाबेस यही रहेगी, ओके. राइट. सो असल में थिंग इज़ पहले सही था, आई डोंट नो व्हाई आई फक्ड इट अप. ग्रेड सेलेक्ट कर लो, ठीक है, आ गया आंसर. हमज़ा नाम के बंदे का सिर्फ एक ही रिजल्ट है, ठीक है, नो टेंशन, ऑल गुड, यू नो इट्स या फकिंग हेल मैन. अच्छा एनीवेज, तो दैट्स डी काउंट एंड काउंट इफ, ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर लिए हमने. राइट, नाउ मूविंग ऑन. कैलकुलेट फ्री, अच्छा हाँ, व्हाट इज द 65th परसेंटाइल, 33rd एंड 82nd परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड. अच्छा, सो परसेंटाइल्स निकालने हमने, ठीक है. तो सबसे पहला है 65th परसेंटाइल, राइट. सो परसेंटाइल का क्या फॉर्मूला होता है. परसेंटाइल का फॉर्मूला परसेंटाइल होता है, इट्स दिस वन जिसका सिर्फ परसेंटाइल लिखा हुआ है. ये परसेंटाइल डॉट इंक्लूजन है, परसेंटाइल डॉट एक्सक्लूजन है. तो जस्ट सिलेक्ट नॉर्मल परसेंटाइल, ठीक है. ओपन दिस. Now percentile is very simple. You select the values जिनकी percentile चाहिए and then we write down कि कौन सी percentage चाहिए हमें. So we need the 65th percentile सबसे पहले, right. So यहाँ पर, अच्छा, another thing that you need to remember, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर लिखा हुआ है is the percentile value that is between 0 through 1 inclusive. 0 through 1, तो 65% would be 0.65, right. दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो. जो भी परसेंटाइल, अब अगर यहाँ पर है 65th तो मैं 0.65 लिखूँगा, 33rd 0.33 लिखूँगा, 82nd 0.82 लिखूँगा, ठीक है. सो ओके दबाया, यहाँ पर 65th परसेंटाइल आ गई, मैं यहाँ पर 33rd भी निकाल लूँगा. क्वार्टाइल के अंदर अरे मेरा ये पूरी सिर्फ नंबर्स होंगे. यहाँ पर क्वार्टाइल, यहाँ पर क्या कहते हैं, इट ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन के फर्स्ट क्वार्टाइल, मीन वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू. हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.33, राइट. आंसर है 4, which I do not know how that works. Apparently that's the answer. We will accept it. We will move on. क्वार्टाइल, अरे ये, और आखिरी क्या थी, 82nd, राइट. Just increase this. So 0.82. Alright, that's our percent. Oh shit. That's our percentile. Okay, alright. That is that. No way, no way in hell is that fucking correct. What? How does that make any sense?
ओ मैं क्वार्टाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं परसेंटाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा, ओह शिट। ओह फक, मैं क्वार्टाइल रेंजेस क्यों निकाल रहा हूँ यार, परसेंटाइल निकालना था। मैं भी कहूँ, व्हाई एम आई गेटिंग द रॉन्ग फकिंग आंसर। Anyway, select the entire thing. Please do not make that mistake. Please do not make that mistake. 0.33 है. Enter 51 हमारा आंसर है. And now we go for percentile again. और ये हम निकाल रहे हैं 82nd percentile. 33 का हमने निकाल लिया, अब हमने 82 का निकालना है. So 0.82 is our k value. Enter 73.504. You can calculate this yourself if you're not satisfied. Um, but yeah, I am satisfied because I'd like to move on. Yeah, so there we go. That's our answers. Great, good move. Acha. Anyways, moving on. Draw box and whisker plot. अब ये है ना असल हॉरी. अच्छा, so let me just get rid of all of this. Yeah, I'll just get rid of that. Inko, I'll move this here. I'll move these here. These I will move here क्योंकि मैं अपना box and whisker plot के लिए जगह बना रहा हूँ. Right, and this I will move here. Decount का जो answer था that I will move there. Alright. Anyways, so what we need to do first is box and whisker plot के लिए there are a few things that we need. First of all, we need our minimum value. Minimum value. Then we need our lower quartile, which is 25%. This is shit that you will have to remember, by the way. I'm like, yeah, 25th percentile. उसके बाद फिर median आता है, उसके बाद upper quartile, which is 75th percentile, और उसके बाद आता है maximum value. Okay, and then we have to find these out from this data table. So our minimum value, उसके लिए simple formula min, यहाँ से देख के भी कर सकते हैं obviously. Minimum value ये सारी select की. Minimum value, oh fuck, मैंने minus लगा दिया था तो इसलिए minus हो रहा है. Lower quartile, so I will, instead of writing percentile, I'll just write quartile. ठीक है, array will be this entire thing, and then our quartile will be first quartile. So 46.2 is our lower quartile. Our median value वो हम median लिख के यू निकाल सकते हैं. That is our median. Our upper quartile is quartile, right, array, and then we'll go with the third quartile because that's the 75th value, right. Boom. Maximum value, max, I mean यहाँ पर लिखा हुआ है 82, but हो भी सकता है कि डेटा अनग्रुप्ड हो. Now अब हमने एक और चीज़ लिखनी है. So we will write here lower whisker. ठीक है, lower LQ which is lower quartile, median value, UQ which is upper quartile, and maximum, and low whisker, high whisker, I think it was, yeah, high whisker, whatever the fuck. I will link the video for this in case किसी को मेरे तरीके से समझ नहीं आ रहा तो वो वहाँ से समझ ले. Now this is very important. Median value, यहाँ पर सिर्फ इस वाली टेबल के अंदर हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज़ जैसी हैं वैसी लिखेंगे, which is our lower quartile and our upper quartile. बाकी सारी will be changed. ठीक है, it cannot be our maximum value or our minimum value or our median value. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 46.2. ओके, और लो विस्कर क्या होता है? It's basically our lower quartile minus our minimum value, right? So it's our lower quartile minus our whisker, or it's our lower quartile minus our minimum value. So it's that. Our median is basically our median is our हमने median basically निकालना है कि हमारा median कितना ऊपर है from our lower quartile, like how many value
कितना डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मीडियन माइनस आर लोअर क्वार्टाइल। तो ये हमारे पास हमारी लोअर क्वार्टाइल वैल्यू आ गई। अपर क्वार्टाइल ऐसी लिखी जाएगी 71.8 एंड और मैक्सिमम वैल्यू विल बी हाउ क्या कहते हैं, और हाई विस्कर विल बेसिकली बी कि हमारी के इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अपर क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, दैट्स आर हाई विस्कर। सो वो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्ट शिट बाय basically subtracting our maximum value from our upper quartile, right? Let me real quick, let me just double check, make sure if this is exactly what it was. I just need to be sure. Give me 1 second. Okay, so I just had to double check. Our upper quartile will not be this value. Our upper quartile is basically um, how how much higher our upper quartile is from our median value, right? So यहाँ पर फॉर्मूला होगा अपर क्वार्टाइल इस वाली टेबल के अंदर अपर क्वार्टाइल का of this subtracted with that, right, which is our upper quartile value minus our median value. वो जब निकालेंगे that is 14. Our lower quartile will be the same, otherwise everything else will be subtracted from. So real simple, lower quartile उस तरह ही लिखा जाएगा. So this we need, obviously this is what we'll calculate using the actual table. This will calculate using these values, और जो हमारा graph बनेगा, our box and whisker plot will be made using these values. We cannot use these values to make our box and whisker plot. We will have to use these values, right? So real simple, lower quartile ये लिख लो कहीं. Lower quartile low whisker is basically calculated through subtracting our lower quartile value from our minimum value. वो low whisker आ जाता है. Our median मेरा पीसी बंद हो गया, अच्छा. Our median value is basically the difference between our lower quartile value and our median value, which is 12. Our upper quartile value is basically the difference between our median value and our upper quartile value, which is 14. And our maximum value and our high whisker is basically our maximum value subtracted with our upper quartile, ठीक है. ये राउंड ऑफ हो गया इसलिए यहाँ पर आंसर 10 आ रहा है. But yeah, this is basically what we will use. So now to actually make the box and whisker plot, हम जाएंगे insert में, selecting these three, only these three, not our lower whisker or higher whisker, वो बाद में इस्तेमाल होता है. Select these three, your lower quartile, your median value and your upper quartile. Select these three and go over to charts, all charts खोलो and go over to bar graph, ठीक है. और बार ग्राफ के अंदर वी बेसिकली नीड के वैल्यूज़ इस तरह यूँ सीधी आएँ, ठीक है, यूँ इस तरह जुड़ के आएँ. बट यहाँ पर अब इस तरह दो तरीक़ों के हैं, ठीक है. सो देयर्स ये थर्ड ऑप्शन के अंदर ये जो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन असल में मसला द प्रॉब्लम विद दिस वन इज़ इसके जो वैल्यूज़ डिस्प्लेड हैं दे आर इन परसेंटेजेस. वी नीड क्वान्टिटेटिव वैल्यूज़, राइट. सो वी नीड 0, 10, 20, 30 वाली, ठीक है. तो बार चार्ट के अंदर सेकंड ग्राफ, सेकंड बार चार्ट के अंदर सेकंड स्टैक बार, second graph, that's the one that you need. Now here's where it gets a little tricky. I'm sure it is already pretty fucking tricky, but yeah. So this right now as it is our क्या कहते हैं, is our bar graph. This is a box graph, right. अब इसके अंदर विस्कर्स ऐड करने होते हैं. विस्कर्स असल में छोटी सी डंडियाँ होती हैं जो उनमें से निकलती हैं. नाउ ये जो ब्लू वाली होगी, द वन एट द बैक, what we need to do with this one is we need to make it disappear, right. तो इसकी फिल नो फिल कर दो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्टिंग इट, राइट क्लिक करके इसका फिल नो फिल करना है और इसकी आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देनी है. और अब इसके ऊपर हमने whiskers लगाने. whiskers are in the form of क्या कहते हैं, error bars, right. So error bars को क्लिक किया, click this arrow here, go over to more options, और हमें यहाँ पर माइनस में चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है. so you want it in minus, only in minus, ठीक है. और
एरर अमाउंट वो कस्टम होगी. नाउ द वैल्यू दैट वी हैव टू स्पेसिफाई हियर, अब सिंस वी डू नॉट वांट के हमारा एरर बार पॉजिटिव में जाए, वी नीड टू मेक श्योर कि ये ज़ीरो है. ठीक है. एंड आवर नेगेटिव एरर वैल्यू इज़ आवर लोअर विस्कर. ठीक है. once you click OK, that is your क्या कहते हैं नेगेटिव वाला विस्कर प्लॉट. अब इस वाले को सिलेक्ट करके ये आगे वाला जो होगा, डू नॉट मेक इट डिसअपियर. ठीक है. इट नीड्स टू स्टे एज इट इज़, क्योंकि ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारा, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है हमारी अपर क्वार्टाइल. ठीक है. सो वी नीड टू ऑल्सो डिस्प्ले आर हाई विस्कर. सो यू सिलेक्ट दिस, you go over to error bars, select that, इसका एरो दबा के go over to more options, और ये प्लस में होगा, ये माइनस में नहीं होगा, क्योंकि हमें इसकी प्लस की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए. इसकी भी एरर अमाउंट कस्टम होगी. वी विल स्पेसिफाई आवर वैल्यू. सो आवर पॉजिटिव एरर वैल्यू यहाँ पर विल बी दिस, राइट. एंड आवर नेगेटिव एरर वैल्यू विल ऑब्वियसली बी ज़ीरो, क्योंकि हमें माइनस में नहीं, हमें प्लस में चाहिए. ओके दबाओगे एंड देन बूम, देयर यू गो, दैट इज़ योर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट. यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दो, बॉक्स एंड विस्कर plot. If anyone wants, I can send you the video that I learned this from. It is the guy explains it. The guy does a way better job than I have done explaining this. So if you want, I can send it to you guys. But this is basically how you calculate your box and whisker plot in Excel. Excel 2013, that is. Right, now table 2. Consider sheet 1 to answer the following questions. What is the average amount won by a female older than 50? So you go over to sheet 1. Sheet 1 के अंदर हमारे पास ये सब कुछ है. So, what is the average amount won by female older than 50? अब समझ आ गया कि as they've asked us for the average amount, हमें समझ आ गया यहाँ पर average लगेगा. बट अब हमें ये समझना है यहाँ पर average if लगना है या average ifs लगना है. यहाँ पर लगेगा क्या कहते हैं एवरेज इफ. एक्चुअली नहीं, एवरेज इफ्स नहीं, एवरेज इफ. एवरेज अमाउंट वन बाय फीमेल ओल्डर देन 50. विनिंग अमाउंट, अच्छा नहीं, एवरेज इफ्स लगेगा, बिकॉज सी एवरेज नहीं, एवरेज अमाउंट, हाँ एवरेज इफ्स लगेगा, बिकॉज सी देयर टू कंडीशंस. देव आस्क्ड अस फॉर द एवरेज अमाउंट, average winning amount that a female will earn at this event. They've asked us for the average amount won by a female that is older than 50. So our two conditions here are female and older than 50. Is it? I think there's only one. Yeah, they actually यहाँ पर सिर्फ average if लगेगा. Never mind. So यहाँ पर हम लगाएंगे average if. Now our range will obviously be average amount won. So winning amount होगी हमारी average if. हमारी range, हमारा oh shit नहीं, ये जो सबसे अच्छा. So here's the thing, if सिर्फ average if, count if, sum if के अंदर criteria की range पहले डलती है और average की range end में डलती है. but average ifs, count ifs, sum ifs के अंदर एवरेज सम और काउंट की रेंज पहले लगती है, उसके बाद फिर रेंजेस और क्राइटेरियाज लगते हैं, राइट. तो इफ़ यू ओपन fx, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एक्चुअली रीड व्हाट इज रिटन हियर. इज द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट evaluated. So the cells that we want evaluated is female age, which we will select right here. Criteria यहाँ पर होगा female older than 50. Criteria will be speech marks, older than 50, right. Our average range would be this. इसका हमने average निकालना है, which is 340. women over 50. यहाँ पर ये लिख देंगे just so that it is just so that it is evident कि कौन सा वाला part है question का. What is the average age of females who participated in this between weeks 20 till week 30? तो यहाँ पर average ifs लगेगा. अच्छा, so another way to do these is by using d average. So d average कैसे इस्तेमाल करेंगे is that you select the entire heading
and then you paste it here. So after pasting it here, what you do is कि यहाँ पर अब क्या था, क्या कंडीशन है, एवरेज अमाउंट वॉन्ट बाय फीमेल ओल्डर देन 50, फीमेल एज ग्रेटर देन 50. ठीक है. अब यहाँ पर मैं डी एवरेज लगाऊंगा. ठीक है. सो डेटाबेस ये पूरा होगा. we'll select our entire database. Field will be hold on, winning amount. नहीं, actually it will be female age, right, क्योंकि condition female age के अंदर है. And then we will go, we will select all of this. Okay, so I think I understand what my mistake here might be. Wait, if I make the field winning amount, yeah, okay. So my apologies. यहाँ पर field के अंदर you always have to select the value जो जिसका average या जिसका count या जिसका वो चाहिए होता है, sum चाहिए होता है, right. अब यहाँ पर हमें sum चाहिए, इसमें यहाँ पर हमें average चाहिए था of the winning amount, right. So which is why in my field value I selected the winning amount field, data field, right. Criteria हमारा ये था which I selected, और database was this entire database, और value as you can see is the same as that. So ये D average है. D average is it's I sometimes like using D average, D sum वगैरह because it is simpler, it is easier. Sometimes it can be a little complicated, like for the next question that we're about to do, which is what is the average age of females who participated in this between weeks 20 till weeks 30. So मैं weeks 20 till 30 लिख दूँगा यहाँ पर. I don't know अगर उससे मेरा आंसर आएगा. So यहाँ पर average age of females, अच्छा यहाँ पर मैं D average लिखूँगा. डेटाबेस के अंदर आई विल ऑब्वियसली सिलेक्ट माई इंटायर डेटाबेस. अच्छा, डोंट बी अलार्म्ड बाय जो यहाँ पर नाम आ रहा होगा, वो टेबल का एक्चुअल नाम रखा हुआ है मिस ने. सो डोंट बी अलार्म्ड बाय दैट. और फील्ड, अब उन्होंने हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, एवरेज एज ऑफ फीमेल्स, एवरेज एज ऑफ फीमेल्स. सो हमारे यहाँ पर फील्ड होगी फीमेल एज, एंड आवर क्राइटेरिया विल बी दिस. एंड एज यू कैन सी मेरा यहाँ पर कोई आंसर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि ये फॉर्मूला गलत है. सो 20 to 30, if I write that, but that will only give me the values for these 2 years. तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहते हैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इज़ इक्वल टू एवरेज इफ्स. एवरेज इफ्स के अंदर अब मेरी एवरेज रेंज क्या थी, फीमेल एज, राइट. सो आई विल सेलेक्ट द इंटायर थिंग. इफ इट्स मोर देन वन कंडीशन आई वुड एडवाइज दैट यू यूज़ एवरेज इफ्स वगैरह, बिकॉज इट इज़ सिंपलर. क्राइटेरिया रेंज वन क्या थी, वीक, क्या कहते हैं, हाँ, तो क्राइटेरिया, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है वीक. तो क्राइटेरिया 1 क्या है, greater than 20, right. That is our criteria 1. Now our criteria range 2 obviously will still be weeks, लेकिन यहाँ पर रेंज होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्राइटेरिया में डालेंगे less than 30. So that basically let's Excel know कि our criteria weeks के अंदर it has to be greater than 20 but also less than 30, you know. So it has to be just those क्या कहते हैं those weeks, right. So it gives me इन सब का average age. यहाँ पर average age मुझे मिल जाती है, right, which you can calculate and check if it's correct, and I'm pretty sure it is correct. तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है average ifs. Average ifs के अंदर, now as you can see, as I mentioned before, average ifs के अंदर एवरेज रेंज पहले आती है, फिर क्राइटेरियाज आते हैं. लेकिन
एवरेज इफ़ के अंदर क्राइटेरिया रेंज पहले आती है, फिर क्राइटेरिया आता है, और फिर एवरेज रेंज आती है. द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि एवरेज इफ़ के अंदर देर इज़ ओनली वन कंडीशन. सो एक्सेल नोज के एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई दे पुट क्राइटेरिया एंड रेंज फर्स्ट. बट क्योंकि एवरेज इफ्स के अंदर एक्सेल हैज़ नो आइडिया एज टू हाउ मेनी criterias you might want to enter, which is why they have multiple, which is why they've mentioned the average um, average range first and then all the criteria ranges after, because it has no idea as to how many you might want to use. It doesn't limit you to just using one or two. How much total winning amount taken in week 5, 10 and 15? टोटल विनिंग अमाउंट समझ आ गई है कि यहाँ पर सम लगेगा. ठीक है, अब हमें जानना है कि सम कौन सा लगेगा, सम इफ या सम इफ्स. बट here there are three conditions taken in week 5, 10 and 15, right? So यहाँ पर हम लगाएंगे sum ifs is oh shit, sum ifs. So यहाँ पर sum range हमारी होगी winning amount, and our criteria ranges will be criteria range 1 will be week. All our criteria ranges will be weeks. Our criteria 1 will be 15. No, our criteria 1 will be 5. You don't really have to follow that specific order, I just like to, ताकि मुझे खुद confusion ना हो. So 5. Our criteria range 2. Oh shit, मेरा monitor फिर बंद हो गया. Just give me a second. Okay, there we go. Our criteria range 2 will also be, our criteria range 2 will be 10. Criteria range 2 will also be weeks. Criteria 2 will be 10. And our criteria range 3 will also be weeks. And our criteria 3 will be 15. Now I am a little concerned as यहाँ पर answer मेरा 0 आ रहा है. Let me check my ranges real quick. Let me make sure that my ranges are correct. So C2 to C49, right? That is, yeah, that is right. C2 to C49, C2 to C49. For fuck's sake. Some range. H2 to H49. Acha, so if your answer is not showing up, अगर answer सही नहीं आ रहा, then it might be time to use dsum here. So what you do is, again, हर एक जो भी headings हैं सारी copy करके you paste it down below, and then once you have done that, you then enter your criteria. So our criteria is 5, 10, and week 5, week 10 and week 15, right? So अब हम यहाँ पे dsum लिखेंगे, and then I will add my, enter my dsum formula. So I will select my entire database. I will select the field जिसका मुझे answer चाहिए, which is winning amount, and then I will select my criteria. Now since there are 3 rows of criterias here, I will select all 3, right? And boom, 684. You can actually verify that. Week 5 का था 214, week 10 का था 248, और week 15 का था 214. So I'm pretty sure that adds up to 684. अब यहाँ पर obviously I tried it with I tried doing it with some ifs, and some ifs did not work, right? वो समझ आ जाती है. If the value is too little or too high, you know that okay, this formula is clearly not working here, right? So it's better to just क्योंकि while you are writing the formula, while you are trying to attempt it, अगर नीचे आंसर पुट्ठा आ रहा है ना, क्योंकि मैंने देख लिया था
जैसे ही मैंने फर्स्ट रेंज डाली एंड फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया डाला है, मेरा बॉटम पे आंसर ज़ीरो आ रहा था। मुझे समझ आ गया कि अच्छा ओके, यहाँ पर सम इस नहीं काम करेगा, आई नीड टू यूज़ डी सम। there will be क्या कहते हैं situations like that even in the exam where you'll be trying to solve the question one way, and then you'll while you're solving it you'll realize कि, okay, well, this is clearly not working, I need to try solving it another way. I would say, just as a heads up, if ranges are क्या कहते हैं, if a criteria is um, constant, if it's not changing, like अब बी वाले पार्ट के अंदर द क्राइटेरिया वाज बिटवीन वीक्स 20 टिल वीक्स 30। अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पर इट्स बेटर टू जस्ट यूज एवरेज इफ्स, राइट, बट इन अ क्वेश्चन वेयर आपको एग्जैक्टली पता है कौन कौन सी वीक्स हैं, इट्स नॉट लाइक फ्रॉम दिस वीक टिल दिस वीक। इफ इट्स गिवन कि इट्स वीक 5, वीक 10 एंड वीक 15, तो इट इज़ बेटर टू जस्ट राइट देम स्ट्रेट इस तरह एंड जस्ट यूज डी सम। इट इज़ जस्ट बेटर टू, अब जिस तरह इस वाले सवाल के अंदर भी व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट वन बाय फीमेल्स ओल्डर देन 50, यहाँ पर अब क्या कहते हैं, यू कैन use both d average, and I've shown you you can use both average if and d average. um, so you can use both of them there because it's something that both formulas will understand. but अब इस वाले सवाल के अंदर वो सम इफ्स नहीं काम कर रहा था, so immediately just if it's given कि भाई ये वीक है, ये वीक है और ये वीक है, या ये उम्र है औरत की, ये उम्र है औरत की, या ये नाम है औरत का, इसकी टोटल विनिंग्स निकालो, सो जस्ट यूज डी एवरेज, डी काउंट, डी सम, डी मिन, डी मैक्स, use the d formulas. D penis, sorry, just use the d formulas instead of trying to use average ifs or all this other bullshit, because it will be more complicated that way. Acha, find out the max winning amount when children participation score is more than 75 and male participation is more than 230. Now, thing is, there aren't any formulas for like conditional formulas for um, max and min, right? There's max and then there's min. Say max if max ifs वगैरह नहीं है, right? तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमेशा अगर मैक्स के साथ या मिन के साथ if they've given you a condition, तो you have to क्या कहते हैं use, अगर मैक्स के साथ they've given you a condition, मैक्स या मिन के साथ they've given you a condition, तो तभी समझ लो कि भाई मुझे यहाँ पर डी मैक्स या डी मिन इस्तेमाल करना है. Alright, so now the question is, find out the max winning amount when children participation score is more than 75. So children's score is more than कितना था 75, and male participation is greater than 230. ठीक है, ये हमें समझ आ गया, that is our formula. ठीक है, अब मैं यहाँ पर d max लिखूँगा. I will select my entire database. Once I have selected that, I will select the field. So मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? Find out the max winning amount. Max winning amount. So max winning amount when these are the conditions. And then ये field के अंदर I've obviously selected winning amount. And I will now select my criteria. So my criteria is, this is my criteria. 361, that's your answer. So yeah, if they've given you if they've given you a condition with max or min, immediately first thought that comes to your mind, अच्छा मैंने यहाँ पर d max लगाना है या d min लगाना है, 100%. क्योंकि और कोई फॉर्मूला है नहीं मैक्स और मिन का. अच्छा, सो आई विल डू ये वाला कर लेता हूँ, एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू दिस क्वेश्चन, एंड देन क्या कहते हैं, आई विल देन मूव ऑन टू ये एक्सपेंसेस वाला, बिकॉज दीज आर ऑल्सो जस्ट, आई विल ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन क्योंकि ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा
क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, ये वाला क्वेश्चन, ये जो एक कंडीशन होती है कि नेम इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है या ये इस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, वो वाला क्वेश्चन मैं कर लूँगा. उसके अलावा द रेस्ट आर प्रिटी मच जस्ट कंटिन्यूएशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके सो if male participation score, अच्छा actually I won't even do this because मैंने percentile और median दोनों दिखा दिए हैं कैसे करने हैं. इसके अंदर भी वही लगेगा. Average female age with female score above 400, you can use D min, sorry D average, or you can use average if. um, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, एवरेज फीमेल एज, तो समझ आ गया कि एवरेज फीमेल एज का निकालना है, और फीमेल स्कोर अबव 400 तो फिर वो मैक्स विनिंग अमाउंट से निकालना पड़ेगा. राइट ओके सो इफ़ मे, अच्छा हाँ, इफ़ मे, ये इफ़ फार्मूला यहाँ पर, इफ़ मेल पार्टिसिपेंट्स score greater than or equal to 550, then he will be given 7% as a gift from winning amount, else 3%. What is the final winning amount for them? All right, so we'll go here. Final winning amount. Final winning amount. Male participants. Now, obviously, you don't actually have to write all of this. I just like to, ताकि जब मिस बी या उमर जो भी पेपर चेक कर रहा है उनके लिए आसानी हो, और फिर मेरे लिए भी आसानी हो व्हेन आई एम एट द एंड ऑफ माय पेपर, व्हेन आई एम एक्चुअली क्रॉस चेकिंग कि मैंने सारे सवाल किए हैं कि नहीं किए. ओके सो इफ़ मेल पार्टिसिपेशन स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 550, दिस राइट हियर, दैट ये आपका आएगा लॉजिकल टेस्ट में, दैट इज़ योर लॉजिकल टेस्ट. दिस इज़ योर दिस then he will be given this much percentage as a gift, that will be your value if true, and as a gift from winning amount, else जब भी mention होना, else 3%, that is your value if false. Right, so I will solve this question real quick. Okay, so if male participation score, if male participation, I'm pretty sure that is their score. If male, oh, that's actually their score. If male participation score, अच्छा यहाँ पे do not, logical test में do not ever select the entire column. You're only supposed to select the first column. ठीक है, अगर इस कॉलम में काम कर रहे हो तो ये वाली सिलेक्ट करोगे, नीचे वाली कॉलम में काम कर रहे हो तो ये वाली सिलेक्ट करोगे. If male participation score is greater than or equal to 550, value if true, then he will be given 0.07 percent of as a gift from winning amount into winning amount. So he will be given 7%, which is 0.07% as a gift from winning amount, that is your value if true. Otherwise they will get a 0.03, which is 3% of the winning amount. That's your if formula. Boom. So that is this is basically कि उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, like and then इसके बाद आपने फिर इसका वो निकालना होगा. ये फाइनल अमाउंट नहीं है, ये होगी आपकी वो वाली अमाउंट, लाइक इसके बाद यू विल कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट. फाइनल विनिंग अमाउंट फॉर मेल पार्टिसिपेंट्स विल बी बेसिकली, अब तो फिर यहाँ पर सिर्फ ये बेसिकली तुम्हें बता रहा है कि किस बंदे को कितने पैसे मिले हैं फ्रॉम द विनिंग अमाउंट, राइट. अब जब फाइनल कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू विल डू इज़ दिस प्लस द मेल पार्टिसिपेशन स्कोर. शिट, मैंने ऐड ही नहीं किया. दिस plus their final amount that they have won. What? Hey yo, brother, is equal to this plus that. There we go. So that is their final winning amount. क्योंकि ये तो तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं ना कि हाँ कि क्या कौन
कि क्या परसेंट उन्होंने जीता है, whether they won 3% or whether they won 7%. That's all it tells you. You need to calculate their final winning amount उसके बाद. So this is uh, इसको लिख दो whether 3% or 7%. ठीक है? And then this is your final winning amount, which will basically be whatever the result of the if formula is with the male participation score. That will be the final winning amount. Alright. Now ये तो मैंने करा दिया था. Basically normal median लगाना है. Winning amount के ऊपर median लिखना है and then select all of the winning amount के जो भी data दिया गया है, और 50th percentile is equal to percentile. Select the winning amount वाली पूरी table and 50 लिख 0.50 लिख दो, या quartile अगर select करने हैं तो वहाँ पर median value होती है, that is the 50th percentile, तो वो select कर लो and you'll have your answer. Now moving on to you have to copy this, I'm pretty sure. Yeah, let's do that real quick. Oh, for fuck's sake. Oh my god, hold on, let me download this. Oh man. I'll just select this table, copy it here, get rid of these. Right, now सवाल क्या है? अच्छा हाँ, सी करना था हमने. What is the total July salary of employees whose name starts with A, age above 25 and belongs to Karachi city? So यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे some ifs because there's more than one condition. Some ifs. Total July salary, total July salary, that's your sum range. Criteria range 1, whose name starts with A. So ये name वाली the name table will be our criteria range. Starts with A, तो A के साथ apostrophe लगानी है. Apostrophe is control 8 on your keyboard, right? ये apostrophe basically means, it basically lets Excel know that anyone that whose name starts with A, उनका आपने sum निकालना है. ठीक है? So that is your criteria range 1, whose name starts with A, age above 25, age. ये criteria range 2 होगी, age above 25, and belongs to the city Karachi. So belongs to the city Karachi. Alright. Boom, there's your answer. So ये तीनों है. ठीक है? इसका she belongs to Karachi, उसका name A से शुरू होता है, उसके अलावा no one's name starts with A or belongs to Karachi, so you can even check. आलिया रहती है कराची के अंदर, उसकी जुलाई सैलरी 450 है. that's your answer. Boom, that's it, that's done. बोनस इसके अंदर 0.03% डालना होगा, तो वो पहले पता चलेगा कि बोनस मिला है कि नहीं मिला, उसके बाद फिर फाइनल सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो आई विल नाउ ओपन sheet 24. I will do this in another video. अभी के लिए I will upload this so that you guys can get to reading all of this, basically getting it down, so and then I'll while you guys do that I will record this video. All right.